Nasir said he could not say give up. So he needs more time, more help. Nasir, it's still not clear in your head. Okay, so the second page of unit 7, I shared, I think, homework. Let's check. Show me your homework. Were you present here yesterday? Afridi? You were not here yesterday. Did you check out the group? Did you check out the group, Afridi? You didn't check out the group. So you haven't done your homework. Afridi hasn't done his homework. What about the rest of you? You've done your homework, guys? That's a very, very loud yes. Very good. Okay, I like that loud yes. So let's check your homework, how well you've done it. We read about Yuri Gagarin, the first man in space. There are some sentences about him. Read. Gagarin was born in the village of Clusino. The village of Clusino means, yes, very good, very good. Clusino नाम के गांव. Clusino नाम के. In the village of Clusino means, Clusino नाम के गांव में. In the village of Clusino. In the village of Clusino. Clusino नाम के गांव में. Clusino नाम के गांव में. Right. In the village of Clusino. Gagarin was born in the village of Clusino. He did not grow up in a town. He did not grow up in a town. शहर का लड़का नहीं था. He was not a town boy. He did not grow up in a town. He grew up in a village called Clusino. He was born there and he grew up there. He did not grow up. He did not grow up in a town. 3, 2. His parents were very poor. His parents were very poor. They didn't have much money. They didn't have much money. 3. They worked on a collective farm. They worked on a collective farm. They did not own any land. This is a very interesting sentence. They worked on a collective farm. Collective farm, shared farm, it was not their own farm. They did not own any land. यहाँ verb क्या है? They did not own any land में verb क्या है? Please come in. They did not own any land में verb क्या है? जल्दी जल्दी से बताइए. अगर आपको स्ट्रक्चर दिमाग में है तो उसी हिसाब से डिसाइड करिए. हाँ बस इसी को ट्रस्ट करना कहते हैं, जो हम सीखे उसको. सही बोलिए आप. एवरीबॉडी. They did not own any land में verb क्या है? Own. क्योंकि आपको पता है did not के बाद V1 आएगा, वो verb है हमारा. अब अलग बात है कि आपको इसका मतलब समझना लगेगा, बट इतना जान लो दिस इज द वर्ब. आप ओन मतलब अपना अपना सुने होंगे. ओन मतलब मालिक होना होता है. जैसे ओनर सुना है, ओनर. ओनर मीन्स मालिक. अब डांसर मीन्स नाचने वाला, डांस करने वाला. टीचर मीन्स टीच करने वाला. ओनर मीन्स ओन करने वाला. सिंगर मीन्स सिंग करने वाला. लर्नर मीन्स समवन हु लर्न्स, लर्नर. टीचर someone who teaches. Someone who dancer. Someone who owner. Someone who owns. Okay, if I say I'm the owner of a 5-star hotel, I am the owner of a, it means I own a 5-star hotel. I own
A 5-star hotel. Got it? Any problems? So own. आप मेरे मालिक नहीं हैं. आगे आप बोल दिएगा. English. You didn't. क्यों फास्ट क्यों बोला तुमने? मैंने बोला तुम मेरे मालिक नहीं हो, आप मेरे मालिक नहीं हो. Didn't क्यों बोला? इसकी तो जरूरत नहीं. अच्छा चलो. You don't. आगे बोलो. You don't my owner. यही तो फंसाना था. You don't. You don't. You don't के बाद क्या बोलना है? वो तो हो गया, लेकिन you don't बोला मैंने, तो कैसे बोलोगे? You don't own. You don't own. क्योंकि own के बाद, वर्ब के बाद तो आप you don't hate me, you don't love me. हिंदी बहुत अजीब है, इंग्लिश अलग है. आप मेरे मालिक नहीं हो. You don't own me. और ये कैसे समझ में आ रहा है? देख लो. You don't. V1. What is the verb? Own. मालिक होना. You don't own my. कैसे? हाँ, you don't own me. There is a woman. Her husband works in a shop. The shopkeeper is a very rude person. Kindless. Okay? No kindness. He is absolutely unkind. Okay? He is unkind. Yeah. He doesn't care about her husband. When he's sick, he still says, come to the shop. You know? One day, the woman calls the shopkeeper. आप मेरे husband के मालिक नहीं हो, सिर्फ boss हो. You are only the boss of my husband. You don't own my husband. Got it, everyone? So they did not own any land. There are lots of farmers who work on other people's farm, other people's land. They don't own any land. They don't own any land. Nothing. Landless farmers. Landless farmers. They work on other people's land. They don't own any land. Sometimes children get, you can turn around. Sometimes children, have this problem. They grow up and they start arguing with their papa, mummy. आप मालिक नहीं हमारे. You. वही तो, वो नहीं बोलना है, ये वाला बोलो जो सिखा रहे हैं. You don't own me. Okay. You don't own me. I think a husband owns his wife. What do you think? Do you agree? A husband owns his wife. A husband owns his wife. It's a thought. It's a statement. A husband owns his wife. इसका मतलब husband wife का मालिक होता है क्या होता है? A husband owns his wife. Do you agree? No, you don't agree. Okay, fine, no problem. Agree चाहे मत agree, I don't care. ठीक है, ये आपकी ओपिनियन है, right? I've just asked you. आपकी ओपिनियन जो भी है. Nasir Hussain, a husband owns his wife. True or false? In your opinion? True. तेरी शादी होगी, तू अपनी वाइफ का ओनर होगा, right? Obviously, Nasir Hussain agrees with it. ठीक है, a husband owns his wife. सही है बेटा. ये बात सुनने के बाद, हाँ, जितनी लड़कियां बैठी हैं उसको पता चला, जिससे भी शादी हो रही बोल देगी उसको जाके कि ये बोलता है हस्बैंड ओन्स हिज वाइफ. तू करेगी शादी? बोले भाग भाग. हस्बैंड ओन्स हिज वाइफ. डू यू एग्री? लेट मी गो टू माय लिटिल Inaya. Inaya, I want to ask you, a husband owns his wife. Do you agree? A husband owns his wife. Do you think it is right? Now, सुन ले. 7, 17 फर्क देख. 7 बेटा अपना फायदे की चीज में, यस, बिकॉज ही इज अ बॉय ना.
एक गुलाम मिल जाएगी तेरे को, हाँ. Because if a husband owns his wife, it means the wife is a gulam for the husband because he owns her. Zara, do you agree? A husband owns his wife? No. Rajlakshmi, a husband owns his wife? Not at all. Boys, a husband owns his wife? Yes. We are boys. Yes. Let the girl say no. We will say yes. Okay. All right. Under certain conditions. Okay. If she comes from a poor family, then we own her. Now, own her with your love. Own her with your love. That's lovely. That's a lovely thought. If she surrenders herself because of your love, that's amazing. Now, if she says, you are my owner, not because you give me food, because I love you so much, that's amazing. That's the best relationship. No? Atif, imagine your wife says, Janu, you know, you love me so much that I'm ready to be your slave. That's the best. Okay, fine. And you can also say the same in return, that I'm your slave. Okay, dunya boli jaru ka gulam. That's okay. All right. Guys, own is clear to you? Do you think I own you? Do you think I own you? Do you think I own you? No, of course not. Of course not. What nonsense. Okay. Number 3, they did not own any land. Number 4, I'm playing chess. All right. And I have created a situation that my opponent is helpless, bichara. When I am making him move, जिधर मैं चाहता हूं, wherever I want, he is making that move. क्योंकि बेचारा फंसा हुआ है. मैं उसको क्या बोलूंगा? I own you. I own you. चेस में बहुत एक दूसरे पे तंज मारते हैं लोग, दिमाग भटकाने के लिए. To distract them, sledging is very common in chess. 2 people are playing, they make a move and then look at the person and they say, तेरे बस के बाहर है. All right. Sometimes it goes beyond a limit, then the referee comes into the picture, you know. You complain that he's talking too much. Okay. But a little bit of, you know, exchange is fine. There is a beautiful girl on YouTube. She challenges people to play chess. Do you know that girl? Oh, I'll share the video with you. She's very beautiful and she wears beautiful clothes, and people watch her videos for her beauty as well. But a lot of people watch for the chess she plays. She's an amazing player, very good player. Okay. And once she played with a young boy, he was 9 or 10 years old only, and he defeated her. Okay. She was trying to say so many things to him, but he was very, very focused. He was also replying, you know. So sledging is good. When I play chess, I also sledge a little bit, you know. And one of the most common lines, I own you. I कब बोलते हैं हम लोग ऐसा? जब सामने वाला फंसा देते हैं ना, बेटा जैसे कहेंगे वैसा चलो तुम, हटाओ पीछे, you know. Like situation is such that उसका मजबूरी है वही चलना जो हम चाहते हैं, right? So in that situation we say I, मतलब समझ रहे हो ना, कि हम जैसे कहेंगे वैसे करोगे तुम. I own you. Okay? You know, my girlfriend treats me like she owns me. My girlfriend treats me like she owns me. मेरी गर्लफ्रेंड हमको ऐसे ट्रीट करती है ना जैसे कि मेरी मालकिन हो. I want to break up. All right. Got it. No problems? No. Okay. Yeah. He was 9 years old only. No. He was a good player. That's why he defeated her. She was defeated. She was, because he was 9. If he was older, then he would get distracted by her, right? That's what you're trying to say. Sometimes she loses, sometimes she wins. That's how it goes in games, right? Sometimes you win, sometimes you lose. That's normal. Nothing strange. I mean, people who love games, those who love playing games, they want to win, but they also accept defeat. Yes, please. So let's continue.
ओन इज क्लियर, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ब। आपको ओन के दो मीनिंग पता चल गए बेटा। आई हैव माई ओन हाउस, आई हैव माई, ये ओन वर्ब थोड़ी है, वर्ब तो हैव है हमारा। आई हैव माई ओन हाउस, ये ओन हाउस के पहले तो एडजेक्टिव होगा, सोचो। हाउस नाउन है बेटा, नाउन के पहले जो नाउन के बारे में कुछ भी बताने के लिए आए वो वर्ड क्या होता है? जैसे ब्यूटीफुल हाउस, ए बिग हाउस, ए चीप हाउस, ए डर्टी हाउस, एन ओल्ड हाउस। हाउस के पहले एक वर्ड आएगा जो हाउस के बारे में कुछ बताएगा, वो क्या होगा? माई ओन हाउस। ओन क्या है बेटा? पक्का, इजी। और ये ओन क्या बेटा? आई ओन ए हाउस, आई ओन ए हाउस। यप, सब्जेक्ट आई, verb own. Okay. Yeah. An old man is saying, when I was young, I owned three expensive cars. I owned 5 big houses, but I lost them all. आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप लोग अपना अपना अंदाजा लगाइए, हाउ एंड व्हाई. ओके, yeah, whatever. Okay. Gagarin was clever at school. Gagarin was, he was a good student. He was clever at school. Gagarin was, are you clever? Are you clever? Okay, clever has two meanings. One, clever means in life you make smart decisions. Okay, and two, you are good at studies, a clever student. All right. A clever person whose mind works in a sharp way. All right. Clever in Hindi, ये तो रट्टा मारा था, ठीक है, ये तो रट्टा मारा बचपन में। अब बताओ, ही इज अ क्लेवर स्टूडेंट, वो चालाक स्टूडेंट है। हाँ, ही इज अ क्लेवर स्टूडेंट, हाँ आई नो, चालाक बच्चा। यू आर चालाक ब्रो, या वेरी चालाक ब्रो। ओके, ओके, बताओ, ही इज अ क्लेवर स्टूडेंट, व्हाट डज इट मीन इन हिंदी? पढ़ने में बहुत अच्छा है, ही इज अ क्लेवर स्टूडेंट। माय ब्रदर इज अ क्लेवर स्टूडेंट, अदनान इज अ क्लेवर स्टूडेंट, अदनान इज अ, but I don't think he is very regular. Adnan, beta, why are you so irregular? No. Why are you so irregular, Adnan? And you never inform me when you go absent. From next time, before you go absent, I want a message from your mom that my son is going to be absent today. He is absent today because of this reason. Tell your mom that sir was talking about my irregularity. He says that I'm a good student, but I'm irregular. Okay? Okay. If you guys notice about Inaya and Ayat, I think you guys would say they are the most regular students. They have hardly missed classes. They were out of Bihar Sharif for some days, so they were not coming to the class for 2 or 3 days, right? Back to back. Otherwise, they are most regular. They're always here, every day. This kind of habit, this kind of discipline and in family is very important. Do you think it is in their hand? Their mummy gets the credit, their papa should get the credit for this kind of childhood. Would you agree or not? Their mummy and papa deserve credit for the way they are raising the 2 daughters. The same 2 daughters in another house may have a very different childhood. Things are not in their hands. Their parents decide what they will do. They only follow. And it is not that they started it today. Arsalan is not here today. Arsalan's father is worried about him. But somewhere it is also true that I don't think Arsalan got the same kind of time from his parents. Nothing more, just time. Some children are lucky that they get time from their parents. And some children don't get time from their parents. When? When you're small. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. During that age, if you are with your parents most of the time, good or bad student, another thing, you will have very few bad habits. When at that age, when you are 3, 4, 5, and you spend a lot of time alone,
out of home, that's when things start to go wrong. Maths, in maths, what happens? If you change a line by 1 degree, then at first that 1 degree is not visible. That you don't notice that there is a change. Keep going further, and the gap will keep getting bigger and bigger and bigger. And because of that 1 degree, you can reach somewhere totally different in the long run. So when children start to go down the wrong track, at first it is not even noticeable. That gap is very small. But as they grow, keep walking that line, keep walking down that line. Slowly and slowly, they end up in a place where parents are, how did he become like this? People often ask me, why do you have one child? Why not another? I didn't think I had the time, energy. Money is not everything. Okay. If I'm buying 1,000 rupees dress for Aditi, I'll buy 500 rupee dress for her if I have 2 children. If we have chicken every Sunday, we will have twice a month if we have 2 children. But time is the point. Can I spend time with her? Do I have the energy for the second child? So that's important. I'm not saying everybody should have one child. I'm not saying that. I'm saying people should understand that they need to spend time with their children before you start complaining about your children. Let's move on. Gagarin was clever at school, but sometimes it didn't work very hard. Sometimes it didn't work very hard. Like you guys, like Rudra, like you, Deepak, like who else? Like you. Clever, okay, but didn't work very hard all the time. Sometimes it didn't work very hard. It's normal. Sometimes everybody slacks. Sometimes everybody. अभी ये slack का part of a speech बताओ. मेरा sentence है, sometimes everybody slacks. Sometimes everybody slacks. Slacks का part of a speech बताओ. Noun, verb, adjective. Sometimes everybody slacks. ये कैसे डिसाइड होगा? तो तुम स्लैक के बारे में मत सोचो, इस अरेंजमेंट के बारे में सोचो कि अगर ये स्लैक नहीं होता तो क्या होता. कोई और वर्ब रख के देखो, कुछ भी रख के देखो, कोई भी और वर्ड. वो नाउन रख सकते हो, वहां पे मीनिंग आ जाएगा. वर्ब रखोगे मीनिंग आ जाएगा. एडजेक्टिव रखोगे मीनिंग आ जाएगा. जिससे आ जाए वो इसका पार्ट ऑफ स्पीच. समटाइम्स एवरीबॉडी स्लैक्स. हाँ, दो एग्जाम्पल दो जो तुम्हें लगता है वैसा एक वर्ड रख के देख लो. हाँ तो बोलो ना, एक से एडजेक्टिव रखो वहां पे. समटाइम्स एवरीबॉडी. तो सी के बाद बोला तुमने क्या? ही के बाद क्या बोला? रन्स. रन क्या था? तो तुम वहां तक कहां चलेगा? बट अगला वर्ड देखना था ना. समटाइम्स एवरीबॉडी प्लेज. समटाइम्स एवरीबॉडी cries. Sometimes everybody goes absent. Goes. तो क्या था अगला वर्ड? तो तुम वहां कैसे चले गए इतना सारा बीच में छोड़ के? मैं तुम्हारे दिमाग में कमजोरियां जो उसको एकदम सामने से एड्रेस कर रहा हूं, है ना. समटाइम्स एवरीबॉडी स्लैक्स. इसने पढ़ा ना हम लोगों ने कि ही डजंट, समटाइम्स ही डिडंट वर्क वेरी हार्ड. मैंने कहा इट्स नॉर्मल. समटाइम्स एवरीबॉडी स्लैक्स. तो यही बात बोली है मैंने. स्लैक करना मतलब क्या होता है? अभी तो बताया. हाँ तो अंदाजा लगाओ ना. आदत बनी हुई है, टीचर बोलेगा तो मेरा दिमाग ही नहीं काम करता. कॉन्टेक्स्ट क्या था कि समटाइम्स ही डिडंट वर्क वेरी हार्ड. मैंने कहा नॉर्मल, इट्स नॉर्मल. समटाइम्स एवरीबॉडी स्लैक्स. वही बात बोल रहा हूं ना, नॉर्मल है. कभी कभी तो सब लोग काम मेहनत. समटाइम्स एवरीबॉडी स्लैक्स. तो स्लैक करना मतलब क्या होता है? अपने काम को अच्छे से. तो बस यही ना बोलना है आपको. समटाइम्स एवरीबॉडी स्लैक्स. ओके. तो आप अंदाजा लगाइए अपने पढ़ाई के दम पे, जो पढ़ाया गया उसके हिसाब से. एडजेक्टिव बोलना कितना गलत था, समझ आ रहा है? पोजीशन समझना, वैल्यू करना है. आपके वर्ड्स जो है सामने नए आने पे आप अंदाजा लगा सकते हैं. ये वर्ब है, इसका मतलब स्लैक मतलब कोई काम करना होता है. ठीक है. अब कौन सा काम करना? लापरवाही करना, दूसरे शब्दों में.
स्लैक मतलब, क्योंकि अपने काम अच्छा से ना करना को कौन सा काम कहते हैं? तो जो चाहे उसकी हिंदी रखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है? लापरवाही करना, अपना काम पे ध्यान ना देना। ठीक है? आजकल ना मेरा बच्चा ना थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। आई थिंक दीज डेज ही इज स्लैकिंग, ही इज दीज डेज ही इज स्लैकिंग। समझ में आया कैसे बना? स्लैक्स, ही इज स्लैकिंग, हुआ, वर्ब था, समझ में आ गया, ऐसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल एकदम बाउंस हो रहा है सारा कुछ, ये समझ में आ रहा है कि कैसे हमने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, आपका दिमाग क्या गौर करे उसके बारे में, और फिर बाद में उसके साथ क्या करे। मीनिंग अंदाजा लगाना, वो 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, अंदाजा लगा सकते हैं। समटाइम्स एवरीबडी स्लैक्स, ओके सर आजकल ना मेरा पढ़ाई पे ध्यान कम लग रहा है। अरे टेक इट इजी, समटाइम्स एवरीबडी स्लैक्स, ओके। तो मैं ये पढ़ाने वाला नहीं था स्लैक, ये तो बस यहाँ पर आ गया, मुंह पे आ गया, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कैसे आप नए वोकैबुलरी को सीखते हैं। नया वर्ड सीखने का तरीका देखा? कभी ऐसे सीखा है बचपन से आज तक कि ऐसे गौर करो फिर अंदाजा लगाओ कॉन्टेक्स्ट से, ऐसा कभी बोला? सीधे टीचर ने कहा लो मैं हिंदी बता देता हूँ लिख लो, यही हुआ ना? इसकी वजह से तुम हो जो हो, खराब स्टूडेंट्स। मेहनत करना सीखो, दिमाग लगाना सीखो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई सामने वर्ड आए तो पहले ये तो कहो कि ये नया वर्ड है मेरे लिए, स्लैक्स, ओके। Gagarin was clever at school, but sometimes he slacked. Sometimes he slacked. ed लगा दिया मैंने. Sometimes he didn't work very hard. Okay. Number 5. He was only 1.57 meters. He was only 1.57 meters. Come on, guys. Next sentence. Okay. He was only 1.57 meters. He did not grow very tall. When I was a child, everybody called me Natu. Everybody called me, I was called Natu. My family, cousins, and my friends, and some other people, Natu. Because other people, not Nata, Natu. Natu. They called me Natu because I was cute, not bad. When you are bad, then people call you Nata. When you are a little cute, then they call you Natu. Do you agree? अगर बदमाश लड़का थोड़ा कम हाइट का होता है, लोग नाटा, राइट? राइट? But when you like that person and he's short height, then you say Natu. Like Natu has a sense of affection in it. Nata doesn't. That's why I said no. They didn't call me Nata. बेटा लैंग्वेज टीचर हूं मैं, थोड़ा थोड़ा सा बात पकड़ता हूँ। बोलो दोनों में एक ही फर्क, एक ही बात है या थोड़ा सा फर्क है दोनों में, हल्का सा? महसूस किया कभी? नाटा नाटू। अगर थोड़ा प्यार रहे उस नाटे के लिए तो क्या बोलते हैं उसको? चिड़चिड़ा के क्या बोलते हैं? अरे नाटा, राइट? हाँ। ओके, वो बात अलग हो गई, हमने वो बात नहीं निकाली है। हम ये दोनों पे बात करें कि नाटू नाटा सुनने में एकदम एक है, लेकिन हल्का सा फर्क है, ये समझिए। ऑफ द टॉपिक चले गए आप, पॉइंट नहीं समझ रहे थे, पॉइंट क्या था बोलने का? समटाइम्स वर्ड्स हैव अ फीलिंग। क्या नाटू और नाटा एक ही है कि नहीं है? दोनों आदमी तो एक ही है। प्यार से अगर हल्का बोले तो हाँ, और साथ छिड़ के बोले तो ये इंग्लिश में भी ये सब चीज सीखने के लिए तैयार हो तुम कि वर्ड एक ही रहेगा, लेकिन हल्का सा फीलिंग हो सकता है अलग। फीलिंग पकड़ना, नुआंस कहते हैं इसको, ऐसे फर्क को क्या कहते हैं? नुआंस। द नुआंस इज डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? नाटू और नाटा में नुआंस अलग है हल्का सा। ठीक है? कुछ समझ में आया बेटा? रटा रटा हुआ पढ़ाई और ऐसा पढ़ाई में फर्क समझ में आता है?
हर बात में समझना, सोचना, दिमाग की शार्पनेस बढ़ानी पड़ती है कि हम तैयार हों हर जगह। ये नहीं कि रट दे दो 10 वर्ड, रट के आ जाएंगे कल हम। हाँ हो गया, सुन लो, आज डांट पड़ दे दो, खड़े कर दो, वो सब सेकंड सब स्टैंडर्ड पढ़ाई है। करेंगे ऐसे जगहों पे नहीं जहां पर स्किल डेवलप करना चाहते हैं। एग्जाम के लिए कर रहे तो कर लेंगे, ऐसे एग्जाम निकल जाता, निकल गया, बात खत्म। बट वी आर नॉट स्टडिंग जस्ट फॉर एन एग्जाम, वी आर स्टडिंग टू improve our skills. Okay, he did not grow very tall. People thought, लोगों को लगता था, I would not grow very tall. People thought I will not grow very tall or I would not grow very tall. कल ही तो बताया, people thought, हाँ my everybody thought that I would not grow very tall. Well, I'm not tall, but I'm not short, right? I'm just average. 5'7.5" is average height for Indian boys, I think. Yeah. So yeah. Suddenly after class 10th, my height increased. Up to class 10th, I was really not short height. I was rejected from for NCC. I wanted to join NCC, and I went there. They said, "You're not tall enough." They said, they rejected me. I was very upset that day. I came back to the class with a long face. What happened? My friends asked. They said, I'm not tall enough. I was very unhappy. You don't like hearing that kind of thing when you are 14 or 15 or 16 years of age. You don't want to hear this kind of thing. It breaks your confidence. I still remember that day. I still remember very clearly how I went into the office. The teacher looked at me. Yes, sir, I also want to join the NCC. But your height, sir, you're not tall enough. Okay, sir. Went back slowly, feeling sad, upset. My friends, kya hua? He said, I'm not tall enough. Some of them were happy, smiling. Some of them were quiet. Okay, because I was sad. I still remember that. Oh my God. Okay. So what? Sunil Gavaskar was short, right? Sunil Gavaskar is short. Sachin Tendulkar is short. So your height doesn't matter. Your skills matter. So what if somebody is short? How does it matter? Just because some girls will not date you, it's okay. Other girls will date you, right? Yeah, I don't know. Well, how many of you guys know somebody who feels sad about these things? Do you know someone? Sometimes these people don't show that they feel sad about their height or their looks, but they feel that way, you know? It's a very, these guys feel lonely. Okay. I was very lonely as a teenager. I was very lonely as a teenager. Lonely means happy or sad. Why? You don't have money? No. You feel like nobody? Yeah. Okay. So he did not grow very tall. Number 6. He orbited the Earth in April 1961. Orbited. He orbited the Earth. Who orbited the Earth? Yuri Gagarin in a rocket. He orbited the Earth. He orbited the Earth means he went around the Earth. अगला वर्ड नहीं आता है ना दिमाग पे, मुंह पे तुम्हारे, तो मुझे डर लगता है क्यों नहीं आ रहा है। जब तुम्हें ऑर्बिटेड पता है तो वेंट के बाद अगला वर्ड आना चाहिए, वेंट around the Earth. Okay. He orbited the Earth means he went around the Earth. Okay. In April 1961. But he didn't go to the moon. He didn't go to the moon. 7. After 1961, he continued flying planes. He continued flying planes. After 1961, he continued flying planes. Okay. He continued flying planes. उसने प्लेन उड़ाना बंद नहीं किया, उसने मुझसे बातचीत बंद नहीं की. He continued. देख लो नीचे देख लो, ऊपर मुंह मत करो, नीचे देखो, जो सिखाया वो लाइन पर ध्यान दो.
हाँ, बस इसी से सीखते हैं, नजरें ऊपर कर लेते हैं। सीखना यहाँ है और ऊपर देखने लगते हैं बोलते समय। जहां सीखना वहां नजर रखोगे, सीख जाओगे। ठीक है, बात समझ आई? उसने इंग्लिश सीखना बंद नहीं किया। इजी। जो सीख देखे वो सीखे, जो सुने वो सीखे। यही स्किल डेवलप करवाना चाह रहे हैं आपके अंदर, कि आपके सामने कुछ आ जाए, आप सीख जाए। सीख गए। अभी से पहले हो सकता है आप श्योर नहीं होते, अभी से हो गए श्योर देख के, चलो भाई ठीक है। वो मुझसे मिलती रही। राइट। हम्म। सीक्रेटली। है ना? सीक्रेटली। ओके। एनी प्रॉब्लम्स? हर हस्बैंड हैड प्रॉब्लम्स, यू डोंट हैव प्रॉब्लम्स। ओके। ऑलराइट। After 1961, he continued flying planes, but he Hmm. चलो फिर अगला लाइन, वो मुझसे बात करती रही लेकिन मेरे घर नहीं आई दोबारा। He she continued, but she did not come to my house again. दोबारा नहीं आई, एक बार है ना, दोबारा नहीं आई। Because my mother had insulted her. Because my mother had, हाँ, very badly, very badly. Okay. No, it didn't go that bad. Okay. नंबर 8। माँ को लगता है मेरा 10 लाख का बच्चा, 10 लाख का चेक बाउंस करवा देगी। हाँ। हाँ, तो बाउंस ही हो जाता है ना लड़का, जब व्हेन द बॉय फॉल्स इन लव, वो चेक क्या होता है बेटा? बाउंस हो जाता है, दैट्स द प्रॉब्लम। 8। He died in a plane crash in 1968. He died in a plane crash in 1968. He died in a plane crash in 1968. Okay. मर गया। He died in a plane crash in 1968. Investigators पता नहीं कर पाए, नहीं जान पाए। They didn't know, उनको पता नहीं चला। They didn't know why his plane crashed. उसका प्लेन क्रैश क्यों हुआ पता नहीं चला है। They didn't know why his plane, तो क्रैश्ड। ईडी। यही तो टेस्ट था तुम्हारा, पूरे एक्सरसाइज में यही एक जगह टेस्ट था बेसिकली। ये है 100 मार्क्स वाला एग्जाम। अगर क्रैश लिख दिया तो 100 मार्क्स, क्रैश नहीं लिखा तो 60%, एक क्वेश्चन से पास मार्क्स सिर्फ। ओके। इफ यू रोट क्रैश तो 100% तुम सीखे हो। अगर तुमने क्रैश की जगह क्रैश लिखा है तो तुम सिर्फ 60% हो। तुम्हें क्या लगता है सारे क्वेश्चन एक जैसे पैटर्न दे दें? नहीं, उससे क्या होता है कि तुम 60% में 100% फील आ जाएगा। नो। क्यों यहां छूटा है ईडी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि पास्ट की बातों के लिए हमें E2 बोलना होता है। इन्वेस्टिगेटर्स डिडंट नो व्हाई हिज प्लेन क्रैश्ड। अभी समझ में आ रहा है? खुद से नहीं आया, क्यों? क्योंकि अभी तुम 100% नहीं सीख पाए हो। मैंने आते के साथ पूछा था, डू यू हैव द क्लैरिटी नाउ? आपने कहा यस सर, है क्लैरिटी। अगर था तो ईडी कहाँ गया क्रैश्ड का? Those who wrote ED, they can definitely feel confident कि बहुत बढ़िया किया मैंने, मेरे दिमाग काम करता है कि now whenever we talk about the past we use ED, V2 form here, positive sentence। कुछ लोगों ने कर दिया होगा why did his plane crash। ठीक है, अगर ऐसा किया है किसी ने तो गलत है। क्यों? क्योंकि आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप बता रहे हैं इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं पता चला, they didn't know why his plane crashed। मुझे नहीं पता मम्मी क्यों चीखी मुझ पे। आई डोंट नो वाई मम्मी शाउटेड एट मी। हमको नहीं पता सर आज क्लास में क्यों नहीं पढ़ाए। आई डोंट नो वाई सर डिडंट टीच टुडे। आई डोंट नो। ठीक है, हमको नहीं पता था कि लोग बैंक में क्यों जाते थे, हमको नहीं पता था बचपन में। आई डिडंट नो व्हाई पीपल
went to the bank. हमको नहीं समझ आता कि लड़कियां रोती क्यों थी इस शादी के बाद. I didn't know why girls cried, yeah, at the time of Vidai, right? I didn't understand. Okay, I didn't know. Say it out loud. Say it out loud if you can. जोर से बोलो. मैं तुम्हें उल्टा करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें पनिश करना है. तुम अपनी आदत को थोड़ा सा ट्विक कर दो. बोलते रहो लेकिन जोर से बोलो. कॉन्फिडेंस झलकेगा तुम्हारा. ऐसा भी तुम्हें पता है कि टीचर ने फांसी तो देनी नहीं है. डू यू थिंक आई एम गोना पनिश यू? नो. तो जस्ट से इट आउट लाउड. गालियां तो नहीं निकाली होंगी तुम मेरे लिए, तो पक्का है. तो यू कैन से दिस. गो ऑन. कम ऑन. टेल अस व्हाट डिड यू से. वो ऐसा बोलती है, किसी को नहीं सुनाई पड़ता. उसका कॉन्फिडेंस हाई नहीं है. शी नोज व्हाई गर्ल्स क्राई at the time of Vidai. What could be the reason? पड़ोसी को मिस करेगी और क्या, इसलिए रोती होगी. Right? She would miss the neighbor. Yeah, that's why she cries. I will not see your face in the evening. Right? That's all. That's all. Nah? Now, bahus don't go on the roof. They have to stay indoors. Betis can go on the roof. Bahus don't go on the roof, you know. So new neighbors are useless for bahus. Okay. Number 8. You saw a bahu going on the roof. Exceptions. Normally, tell me, in anybody's family, are bahus allowed to go onto the roof? What? Just like that? Nah. They go onto the roof with an achal on their head, over their head, and with some company, not alone. Only after getting old, they can go onto the roof alone. New bahus don't go onto the roof alone. Come on, what are you guys saying? I'll talk to your parents and they will disagree with you. New bahus. New bahus go onto the roof without without an achal, without a company. Nah. No, sir. Not in small towns like Bihar Sharif. No. Huh? That's another thing. That's another thing. But in normal areas, neighborhoods like ours, you will not see the bahu alone onto the roof. You will see her with some company. Either the nanad will be with her, or the devar will be with her, or her own husband will be with her, her sasuma will be with her. She won't come onto the roof alone. It just doesn't, people don't like it. You know, they complain, they start gossiping about it. Neighbors start saying things. Oh my God, look at that girl, you know, and they start talking about the family. So no family that actually allows and it's all right. You are a new girl, spend time with the family. What is on the roof? The sun, the same moon, huh? The same birds. What are you talking about? Stay with the family. Get to know each other. What will you get onto the roof? Going alone onto the roof? Nah, I don't support that. I'm traditional. From today, I'm very traditional. Okay. Huh. Yesterday you saw a new bahu. Where? In your neighborhood. Onto the roof. Then He was coming after July. okay, so okay, she was coming to your mohalla. Got it. So she was in the car. Right. So did you give her the muh dikhai? What would you call her, bhabhi or chachi? You would call her bhabhi. So you deserve to go. You should go give her muh dikhai, you know. And this is how you can make a good rapport, you know. Yeah. Rapport. No, everything, you know, I like Indian culture a lot, you know, the friendly neighborhood, relationships with each other, going into each other's houses, you know. Slowly and slowly, these things are disappearing. People have become more self-centered, you know, they don't care about the neighbors. I have always seen neighbors
interacting. I like this. I like this. Yeah. I like to live in a friendly neighborhood where people smile at each other, talk to each other, don't compete with each other, don't feel jealous of each other. It's a lovely feeling. It's a lovely feeling to have lovely neighbors, friendly neighbors. Okay. He died in a plane crash in 1968. Investigators didn't know why his plane crashed. Complete the sentences with a verb in the negative. Yes, sir. हाँ 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 हाँ। तो आप घर आना चाहेंगे? तो आप किसी से पूछ सकते हैं, वहां पर कोई है? अच्छा, एक सेकंड, आप वहीं रहिए। I went shopping, but everything was too expensive. I went shopping. अब आईएनजी क्यों लगा है? V2 चाहिए था। V2 है दोस्तों, देख लो। आपका प्रॉब्लम है कि आप शब्दों के ऑर्डर को ही नहीं ध्यान देते, आप जंप मार जाते हो। V2 कहाँ चाहिए? सब्जेक्ट के बाद ना, मिला कि नहीं? आई वेंट, उसके बाद का थोड़ी ठेका लिया था हमने, उसके बाद भी V2 आता रहेगा। आई वेंट शॉपिंग, बट एवरीथिंग वॉज too expensive. I didn't buy anything. 2. My wife and I had a quiet weekend at home. Weekend, Saturday, Sunday. We had a quiet weekend at home. What does it mean? Some people at weekends go to the park, go to the restaurant, go to the club. They're saying, no, we had a quiet weekend at home. हम लोग आराम से शांति से घर पे रहे. We had a quiet weekend at home. We didn't go anywhere. Got it? Next. Number 3. Unfortunately, I only got 35% in the exam. Unfortunately, I only got 35% in the exam. I didn't pass. I didn't pass. No, because 40% was pass mark. Unfortunately, I only got 35% in the exam. 4. Pete went to a party, but it wasn't very good. He didn't stay. 5. I saw Jenny in town, but I was very busy. I saw Jenny in town, but I was very busy. I didn't have time to talk to her. I didn't have time to talk to her. हिंदी समझ में आ रही होगी ना? मैसेज समझ में आ रहा है ना? 6. My parents' holiday was awful. Awful means very, very bad. My parents' holiday was awful. It rained every day. They didn't enjoy it. My parents didn't enjoy it because it rained every day. Questions: when?
कोई दूसरा जवाब दे दो। व्हेन। वेरी गुड। कोई दूसरा जवाब दे दो। व्हेन। एट वीकेंड्स। कोई दूसरा जवाब दे दो। व्हेन। एट नाइट। ओके, व्हेन। कोई दूसरा जवाब दे दो। नहीं, व्हेन। गॉट इट। गलत बोल दिया आपने। एट हर हाउस कैसे बोल दिया आपने व्हेन के लिए? व्हेन में एट हर हाउस बोल सकते हैं। ओके, गॉट इट। व्हेन। ओके, गॉट इट। एनी प्रॉब्लम्स? जिसको कभी नहीं समझ पूछ लेना व्हेन मतलब बेटा। तो कब का जवाब देते हैं। कब। हिंदी में कर ले थोड़ी प्रैक्टिस। कब। कल। कब 2 घंटा पहले। कब मेरी शादी में। कब पिछले साल। कब 1000 साल पहले। गॉट इट। एनी प्रॉब्लम्स? व्हाई। व्हाई। कुछ भी बोलो, दूसरा जवाब दे दो। व्हाई। कुछ भी बोल दो भाई, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना तुम्हारे दिमाग के जंग निकाल देगा। देयर इज नो टीचर इन योर लाइफ यू विल मीट हु विल टीच यू स्टफ दिस वे। वाई मतलब क्यों बोल करके लिखवा के रट्टा मरवा के छोड़ देने वाले लोग हैं। हाँ कि ना? अब मैं कह रहा हूं कि जवाब दे बेटा। वाई। बहुत अच्छे। वाई। वाई वो अलग है। बहुत अच्छे जवाब। बिकॉज आई डोंट नो वाई। बिकॉज। अरे कुछ तो बोलो, सांस लेके छोड़ देते हो। वाई। बिकॉज यू आर अ टीचर। अब समझ लो क्वेश्चन क्या होगा। मैंने पूछा व्हाई कांट आई फ्लर्ट, बिकॉज यू आर अ टीचर। राइट। समझ में आई बात? कितना सही जवाब बोला है बच्चा। सवाल भी सोचो, है ना? कुछ जवाब देने के समय आपको समझ में आएगा। श्लोक से करें प्रैक्टिस। श्लोक बेटा। व्हाई। बिकॉज यू आर हैप्पी। चॉकलेट लेके आया मेरे लिए। बच्चा व्हाई बोले बिकॉज आई एम हैप्पी। बहुत अच्छे बेटा। ओके। आयत। व्हाई। व्हाई। वो तो हो गया, वो नहीं, नया चाहिए। व्हाई। बिकॉज। कुछ व्हाई। अच्छा हिंदी में कर लेते हैं। क्यों। हाँ आयत क्यों। कुछ भी इमेजिनरी आंसर देना है ना दोस्तों। आपको अपने दिमाग से खुद सोचना है कि कोई सिचुएशन है उसमें क्यों पूछा है तो ये जवाब दे दे। क्योंकि लड़का खराब है। बिकॉज द बॉय इज बैड। ओके। बिकॉज ही इज बैड। मैंने पूछा व्हाई डोंट यू टॉक टू हिम, बिकॉज ही इज बैड। मतलब ये हो सकता है ना, ये कह रहे हैं। सिचुएशन सोचो, है ना? व्हाई। व्हाई। बिकॉज आई एम टायर्ड। सही है। बिकॉज आई एम टायर्ड। ग्रेट। हु। इमेजिनेशन। हु। 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 अरे यार आगे बढ़ो। माई माई माई। हु। 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 हाँ। हु। ओके। 3 people। नहीं, some people. Who? Some people. Okay. Okay. What? What? Your own answer. Any different answer. What? What? Okay. A pizza. What? हाँ तो ये तो कॉपी करना हुआ, दिमाग लगा और लगा। What? Okay. Where? 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 At the bank. At the bank. Where? In the Taj Hotel. Where? Yes. Where? Mapara. Where? In the hospital.
At home. No, Mahapara said something I couldn't hear. Mahapara बेटा, बड़े सुनने दो ना, उसकी आवाज काट दे रहे हो बीच में. Yes बेटा. At hospital. ठीक है, no problems. Okay. Yeah. At her wedding. ये when का भी जवाब हो सकता है ना. At her wedding when का भी जवाब हो सकता है और where का भी, क्योंकि wedding time भी है, wedding place भी हो सकता है, right? Next. How old? How? 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 Okay. ये तो एक तरह का हो गया, और सोचो. How? वो तो एक, अब दिमाग और नहीं लगा रहे तुम, दूसरे तरह डायरेक्शन में जाओ. हाउ? नहीं समझ रहे हो, मैं बताऊं थोड़ा नया करके. हाउ? हाउ की हिंदी क्या होती है? कैसे. हिंदी में बोलो, अब जवाब दो, समझ में आ जाएगा. कैसे? हाँ, बाय मिस्टेक. ये लाइक, ये नहीं समझा. कैसे? कैसा नहीं पूछा. हाँ, हाउ. बाय मिस्टेक, वही तो जवाब आया, बहुत बढ़िया. और हाउ? थ्रू द डोर. हाउ? थ्रू द, नहीं समझ आया, कनेक्शन सोचो. हाउ? थ्रू द. हाउ? स्लोली. हाउ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा. हाउ ओल्ड? हाँ ठीक है, मेरे बारे में बात कर रही है. व्हाट टाइम? व्हाट टाइम? व्हाट टाइम? व्हाट सॉर्ट? व्हाट सॉर्ट मीन्स व्हाट टाइप. व्हाट सॉर्ट मीन्स व्हाट सॉर्ट. या विथ चिकन. नहीं, व्हाट सॉर्ट ऑफ चिकन डिड यू हैव. व्हाट सॉर्ट ऑफ चाउमीन डिड यू हैव विथ चिकन. ओके, चिकन चाउमीन. या व्हाट सॉर्ट, इसका जवाब सोचो ना. व्हाट सॉर्ट. That's good. What sort of girl do you want? She's like Katrina के. Okay, सही है. What sort मतलब what type है ना. What sort. ये श्लोक बोल दे बेटा, डरने की क्या बात है. What sort. तो कुछ लड़के ना आपस में बोलते हैं एक दूसरे को, मेरे को नहीं बोलते हैं. ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है. उनको मैं ना तुम लोग पहले क्लास में ऐसे लड़के हैं जो इतना ज्यादा मेरे से घबराते हैं. ठीक है. People don't really treat me this way. They say what they feel. मेरे ख्याल से दो बातें होंगी, या तो बहुत शैतान हो अंदर से, आपको पता है कि आपकी शैतानी माफी के लायक नहीं है, तो आप दिखाना नहीं चाहते. और अदरवाइज यू आर रियली रियली डाउन ऑन कॉन्फिडेंस, शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस. अच्छा चलो. व्हाट सॉर्ट. अ ब्लू वन. व्हाट सॉर्ट. अ ब्लू वन. ब्लू वाला कौन, किस टाइप का था ब्लू वाला. ओके. हाउ मेनी. हाउ मेनी. हाउ मेनी. हाउ मेनी. हाउ मेनी. हाउ मेनी नहीं बता पाओगे. हाउ मेनी. अरे यार जल्दी जल्दी जवाब दो ना, मुंह देख रहे हो सब. हाउ मेनी. You're not very confident with this. Yes, beta. How many? 3 lakh. All right. 15 lakh. How many? 15 lakh. Okay. तो इसका क्वेश्चन भी तुम ही बनाओगे, ताकि उसका जवाब मैच करा सके. 15 लाख कुछ सोचना. हिंदी में. हिंदी में नो प्रॉब्लम. 15 lakh shoes. My goodness. How many shoes do you have? 15 lakh pairs. Okay, Inaya, lovely. You तुमने जयललिता को बच्चा बना दिया अपने सामने. Jayalalitha had a lot of shoes, you know. It was very controversial. And I mean, there were controversies about her taking gifts, you know. Okay. Yeah, nice. 15 lakh shoes. Do you want them? 15 lakh shoes? Do you really love shoes? Do you want to wear new shoes every day? हेलो. हम्म. हो गया.
तो अभी किस चीज के लिए? Aditi, come upstairs and take the phone and check because I'm busy with the class, okay? Hmm. Okay, how many? I was confused कि उसने 15 लाख बोले तो रुपए तो नहीं समझ लिया because that will be different. How much हो जाएगा फिर? लेकिन she said how many shoes? Very smart. Okay, Naya. Next, how much? How much? How much? 11,000. Okay, 11,000 rupees बोलते तो ज्यादा चलता है. How much? Okay, 11,000 ना बोलो, 11,000 rupees बोलो, $11,000 बोलो तो ज्यादा चलेगा. How much? Okay, how much? 5 liters. How much? 5 liters. Okay. How much water do you drink? 5 liters. Okay. Yeah. Every day. How much? 500? 500 pounds. Okay. Read the message before you share it. Okay. So next. How long? How long? How long? How long means 2 hours, 3 hours, or bolna 10 years. Not only 10 hours, 10 years. How long? Okay, no problems. 1 year. Okay, more. 10 minutes. How long? Okay, how long? How long did you talk to him? 10 minutes? After her? How long का जवाब नहीं है ये. नहीं, how long का ये जवाब नहीं है. How long का ये जवाब नहीं हो सकता. इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज. How long का वो जवाब नहीं है. मैं बताता हूँ. Since when का जवाब है वो. और उसका जवाब होगा since her marriage. After her marriage. Okay? Since when? Okay? How many? How long? We can, but how far वो है 100 meters का क्वेश्चन क्या होना चाहिए? How far? How long में? Time. Okay? 1 week. How long? You want some money. Okay? You want to borrow some money. I say, how long do you need it for? How long do you need it for? For 1 week. It means you'll pay back in 1 week. How long do you want it for? How long do you want it for? Okay? How long was your first marriage? How long was your first marriage? मतलब आपकी पहली शादी? नहीं. How long was your first marriage? मैंने बोला. गौर से सुनो. How long was your first marriage? मतलब कितने साल हो गए हैं? हाँ चला. How long was your first marriage? इसमें समय आना है ना. How long? मैंने when तो पूछा नहीं. When पूछूंगा तो कब हुआ. लेकिन मैंने पूछा how long was your first marriage? When was your first marriage? Then in 1989. ठीक है. When was your first marriage? In 1989. Okay. How long was your first marriage? Okay. How long is the course? How long is the course? 1 year. How long is the course? 1 year. This course is 1 year. All right. Elementary course is 1 year. Okay. Right. Nearly 9 months हो सकते हैं, 10 months हो सकते हैं, but maximum 1 year. Yes. I think it's a cheap course. For 5,000 rupees for 1 year is cheap. Right. Okay. It means not even 500 rupees per month now. For the physical class, the fee is only 5,000. For the online class, it is 7,000, which is nearly 600 rupees per month. Okay. But for the physical class, it's only 5,000. And 5,000 means not even 500 rupees per month. 500 means 6,000, right? For 1 year. So I think for this kind of class, the quality of education you get with the number of the students you have, I think it's very cheap fee, I think. Okay. But हर कोई अपना नजरिया देखता है. सबसे ज्यादा बुरा मुझे कब लगता है पता है? जब वो मेरी पढ़ाई को, मेरी क्लास को कंपेयर करते हैं उन लोग से जो वो मैंने बताया ना, हु मतलब कौन करके पढ़ा के खत्म कर दें, वाई मतलब क्यों लिखवा के खत्म कर दें, उनसे बात करते हैं. भाई वो चीज ही नहीं हो रही यहाँ पे. उसका करने से कोई फायदा ही नहीं है. आप याद करके बैठे रहोगे, आप मुंह से इंग्लिश नहीं निकलना, और आप चाहते हैं इंग्लिश मुंह से निकालना. So all spoken English courses are not equally effective. Some courses are more effective, right? And this is definitely one of those courses which is effective. Okay. How long means clear? All my life. How long? All my life. How long? अच्छा चलो इस पे थोड़ा बाद में बात कर लें क्योंकि इसमें टेंस चेंज हो जाता है बेटा. Number 1, exercise 2.
You have to ask questions. Arrange the words, beta. When? Number two. What time did you get up this morning? Number three. What did you have for dinner last night? In dinner, nahi beta. For dinner. What time did you have for dinner last night? 4. When did you last travel by train? Akhri baar. When did you last travel by train? Last, number 5. What did you do last Sunday? What did you do last Sunday? 6. Where did you go on holiday? Last summer. Last summer. Where did you go on holiday last summer? Where did you go on holiday last summer? Okay. Okay. You can also say, where did you go on last summer holiday? Okay. That's okay. Fine. No problem. So go ahead and practice the question and answers with each other. I want you guys to actually practice everything, but practice number 2 because we have already taken a lot of time. Okay. Go ahead. Practice number 2. The 6 questions and answers. Give answers. Ask each other questions and give answers. Okay. Rajalakshmi. Okay. You 2 are practicing there. Okay. Umar, have him, वो सुनेगा, ठीक है? अमान बेटा सुनना है बातचीत को, फिर ज्वाइन करना हो तो कर लेना. Aman. Umar and Shlok. Okay. Deepak, you're practicing with her. You 2 are practicing together. All right. Okay, you 2 are practicing there. Nasir Hussain, join them. Okay. Yeah. All right. Bitwa, you practice with him. He will listen. He will listen. Okay. Yeah. You 2 practice. Rajlakshmi, beta, you come here. You come here. Okay. Yeah. Guys, you are fine. Start your practice.
These 20 sentences, इस पेज पे 20 sentences है करीब करीब हैं। इस पेज पे 20 sentences हैं करीब करीब। तो क्या वो 20 sentences जैसे 20 sentences और नहीं हो सकते आपके दिमाग में? तो फिर करें, रोका किसने है? ग्रुप में प्रैक्टिस करिए। आई एम गोइंग वेरी स्लो। इन यूजुअली आई फिनिश इट इन हाफ एन आवर। मैंने पूरा समय दिया समझाने के लिए, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें ही बताई हैं, ये सोचते हुए कि शायद आप लोग हंग्री हैं। खाना बर्बाद करोगे तो अगला खाना देना प्लेट में डालना बंद करेगा सर। बात समझ गए? एज सिंपल एज दैट। फाइन, नेक्स्ट वी विल लुक एट द मेन बुक। मेरी बात समझिएगा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं पढ़ाने के तरीके के बारे में बात कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ टेंस वॉइस पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। ये रूल्स वो रूल्स करके आप, मैंने एक स्टूडेंट को बताया आर्टिकल का रूल, बेसिक रूल, ठीक है।
आर्टिकल का बेसिक रूल पढ़ाया, उसके एग्जाम्पल देखते रहा, उसका दिमाग गोल, कह रही है रूल ये कह रहा है, एग्जाम्पल में उसको कंफ्यूजन हुआ। आर्टिकल का रूल कहता है कि किसी डेफिनिट, कोई भी इंडेफिनिट चीज के पहले कोई खास चीज नहीं हो तो ए लगाते हैं। उसने कहा फ्लैट खास चीज है, ही लिव्स इन ए फ्लैट, क्यों बोल दिया, ए क्यों लग गया। पॉइंट यह है कि बच्चों को समझने में टाइम लगता है। अगर आप रूल्स बता दें तो इससे ये नहीं हो जाता कि बच्चे समझ गए, उनके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होते हैं। यू हैव टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन। इसी वजह से वी आर गोइंग स्लो। So today, biography, what are we doing here? Unit 7. Exercise 4. Did we do exercise 4 on page number 56? Have we done it already? Have we done it? We haven't done it yet. Exercise, Bill's life. We have to do Bill's life. All right, interesting. So everybody, there are 2 pages on your book, in your book, page number 150 and page number 153. ठीक है, तो चलो let's go to page number 150 first of all. Do you see a text about Bill Cole, Bill's life? Do you see some dashes there? Dashes? Dashes means the information is missing, right? तो मिसिंग जब इंफॉर्मेशन हो तो सवाल पूछना पड़ता है ताकि जवाब मिले। Look, Bill Cole was born in London. Bill Cole was born in London in dash. तो आप सवाल नहीं पूछोगे, क्या पूछोगे? When? गलती हो गई आप लोगों से, भूल गए आप क्या पढ़े थे। When? डिड नहीं है, बॉस का सेंटेंस है भाई। डिड तो आता है बाकी वर्ब्स, ये तो वॉज का सेंटेंस है, बी वर्ब का सेंटेंस है। व्हेन वाज बिल कोल born? When was Bill Cole born? Right? चलिए नंबर 3, he had 2 brothers and a sister. His father was a da 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 da. तो आप क्या पूछोगे, है ना? उसके पापा क्या करते थे? कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है? देखो देखो, he had 2 brothers and a sister. His father was a dash. मीन्स आपको नहीं पता है उसके पिताजी क्या करते थे, तो आप क्या पूछेंगे? What did his father do? Move on to number 5. They lived in dash. समझ में आ रहा है? तो ये करना है आपको, क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर की परवाह नहीं करनी है। यू हैव टू राइट। कैसे पद सवाल करें सीखना चाहते हैं सवाल करना? So you will practice on page number 150 and after that you will practice on page number 153. The same thing. Go to page number 153. Can you see some dashes? समझदारी से करना, समझदारी है, यूज करना। क्या ऐसे बात करते हैं? ऐसा जरूर पूछना, क्या ऐसे पूछते हैं? हाँ ठीक है। यूज योर कॉमन सेंस। रूल्स यू नो, रूल्स तुम्हारे दिमाग में है, कॉमन सेंस अपना शो करना थोड़ा। सो होमवर्क इज पेज नंबर 150 and page number 153. Got it? Fine. I'll see you guys tomorrow. Bye bye everybody.